Hey everyone, so this is episode 3 and today we are having VARUN Shah and Jay Agrawal for the placement experience of the BlackRock. So these both guys are selected for the PMG, that is the portfolio management group of the BlackRock. So we are starting this experience and they will share all about the BlackRock hiring procedure and the CTC and all kind of questions which you will face in the BlackRock hiring process. So we are going to start from Jay. So Jay, please can you introduce yourself? Hello, I'm Jay Agrawal, final year student from Computer Science and Engineering from SV NIT. And this is the second interview that I had given and about selected, so this is a very positive experience for me. So congrats Jay for that. Thank you. Yeah, similar question I have from Varun. Varun, please can you introduce yourself? Yes, so hello everyone, my name is VARUN Shah. I am currently in the final year of Electronics Engineering from IIT Surat, and this was my third interview experience in BlackRock, and it luckily it gave a positive outcome. So yes, So yeah, Varun, congrats to you also. I'm starting from Varun to you that please can you share about the BlackRock? What about it is your job role that is particularly PMG, right? yes. So according to my understanding, BlackRock generally deals with the asset. I mean the asset management of big companies like Apple and Google. Any big company you name, Yeah. the uh, asset. I mean BlackRock manages their assets and their money for them. I mean where to invest, how much money to invest, how to mitigate the risk, how to diversify the portfolio, and that is what BlackRock does. And our role, I mean the PMG role, it is related more with finance plus tech. It is more of finance. It is understanding. I mean, the portfolio management itself gives us the idea that how can we manage the portfolios of our clients. I mean that's what I have an idea about till now. Okay. So thanks for sharing that. Again, I'm question from the Jay. Jay, please can you share about like the hiring process of BlackRock? I mean जब BlackRock ने कैंपस विजिट किया तो कितने राउंड्स थे उसमें एंड ईच राउंड पे कितने स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो रहे थे एंड सिलेक्टेड हो रहे थे तो लिटिल बिट अबाउट दैट. Actually, this was not only our campus is not participating in this drive. More than one campus is participating at a time. So around 1,000 people were there at the time of PPT, Yeah. in which they told about the job role and what we are going to do and how the company works. And after that, they took one OA, which consisted of three sections, and the shortlist was roughly around 35 to 40 students from the OA. After that, they took the interview. I exactly don't know how many people got selected for the second round. Okay. Two rounds were there because we were directly provided the link to our personal link, and Yeah. both the rounds were done in the single day, and we got the results next day. सो जय थोड़ा बहुत तुम लाइक ऑनलाइन एप्टीट्यूड जो राउंड था अपना असेसमेंट का उसके बारे में कुछ शेयर कर सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस थे अगर कोडिंग में कौन सा पार्ट उन्होंने कवर किया कितना मतलब लेवल से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं. एग्जैक्टली रोल जो था वो डेवलपमेंट साइड का नहीं था, तो कोडिंग क्वेश्चंस तो नहीं थे उसमें. But yes, language questions are there related to Python because we have to use Python APIs, and general aptitude questions and standard OA में जो क्वेश्चन रहते हैं वही थे उसमें. कोडिंग पार्ट कम था और लैंग्वेज रिलेटेड में से पाइथन से रिलेटेड और जावा से रिलेटेड थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट यूज हुए थे. बाकी most of that was from the analytics part, so aptitude was main in that. ओके सो आई एम कमिंग विद द वरुण. वरुण लाइक जो नेक्स्ट राउंड था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे और जो तुमने फेस किए उसके बारे में इफ़ यू कैन शेयर. इंटरव्यू राउंड. या जो भी सेकंड राउंड था ऑनलाइन एप्टीट्यूड के बाद में आई मीन फॉर दैट. हाँ, ऑनलाइन एप्टीट्यूड के बाद में शॉर्टलिस्टिंग हुई और तो उसमें फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था, तो उसमें ज़्यादा टेक रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड बोथ था. तो टेक रिलेटेड में मेरे को प्रोजेक्ट के बारे में पूछा
फिर एसक्यूएल क्वेरीज पूछी थी हमें, ओए में भी पूछी गई थी एसक्यूएल क्वेरीज, और इसमें भी एसक्यूएल क्वेरीज पूछी थी। प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, मतलब एकदम टेक रिलेटेड नहीं, बट आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स टेक, क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या डिफिकल्टीज फेस की, आपने कैसे सॉल्व किया, प्रोजेक्ट्स कैसे डेवलप किए, सीखा कैसे, वो सब। और फाइनेंस रिलेटेड इसमें उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरी लास्ट इंटर्नशिप माइक्रो कंट्रोलर मतलब इंजीनियरिंग साइड थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग साइड। तो उन्होंने यही पूछा था कि इतना शिफ्ट क्यों, अभी फाइनेंस में क्यों अप्लाई कर रहे हो। फिर फाइनेंस रिलेटेड भी पूछे थे क्वेश्चन कि बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है, आपके पास एक्स अमाउंट सपोज है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, किस में रिस्क ज्यादा होता है, किस में रिस्क कम होता है, रिस्क को कम मतलब डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं, और इसे सब क्वेश्चन पूछे थे। और फिर जनरल मतलब क्विज जो जीएफजी के क्वेश्चन होते हैं, पजल्स होती है, वो भी पूछी थी दो। So this like all kind of questions they ask in the only one round, right? हाँ, क्योंकि इसमें एचआर इंटरव्यू नहीं था एंड में। जनरली ऐसा होता है कि दो टेक्निकल राउंड्स होते हैं, उसके बाद एचआर पूछता है ये सब पजल्स और वो सब, बट इसमें एचआर था ही नहीं। फर्स्ट भी मतलब 2 ही राउंड थे, थर्ड एचआर नहीं था, तो इसमें दोनों राउंड में मेरे को पजल्स पजल्स पूछ रहे, और एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा था, मतलब एनालिटिकल मैथमेटिकल बेस्ड। ये जो अभी तक तुमने शेयर किया ये सब राउंड 1 में हो रहा था, राइट? हाँ, ये राउंड 1 में। Jay, can you say about that? What happened with you in the round 1? जैसा कि वरुण ने बोला, the interview was mainly resume oriented and on the finance side. वो लोग टेस्ट कर रहे थे कि फाइनेंस का कितना नॉलेज है, जनरल स्टॉक मार्केट और फाइनेंस का नॉलेज तो होना ही चाहिए, और रेज्यूमे में जो लिखा है मेनली वो पूछ रहे थे। उनको एक मेरे से एक्स्ट्रा सवाल पूछे थे कि पाइथन एपीआईज कैसे वर्क करती है, और मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे मोस्टली। प्रोजेक्ट में थोड़े से ऐसे अंदर साइड जो टेक्नोलॉजी यूज की थी उसके बारे में पूछे थे, और फिर डेटा साइंस से रिलेटेड पूछे थे, लाइक काफका कैसे काम करता है, हडूप काफका मोस्टली। और उन्होंने पूछे थे कि लाइक पजल वजल तो मेरे से फर्स्ट राउंड में नहीं पूछे थे, सेकंड में पूछे थे। फर्स्ट काफी फ्रेंडली इंटरव्यू था और शॉर्ट इंटरव्यू था मेरा, तो बस रेज्यूमे और फाइनेंस पे थे क्वेश्चन। सो तुम दोनों में से किसी का भी रेज्यूमे में मतलब ऐसा प्रोजेक्ट था जो फाइनेंस रिलेटेड हो डायरेक्ट, या जस्ट टेक्निकल प्रोजेक्ट्स थे? प्रोजेक्ट फाइनेंस भी था। कैन यू शेयर अबाउट दैट? यस, मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था, उसमें ऐसा था कि डायनेमिकली जो फाइनेंस का डेटा आ रहा है मैं उसे फिल्टर आउट करके, उसमें मेरा एमएल का प्रोजेक्ट था जिसमें कि वो प्रेडिक्शन बता रहा था कि हाउ टू इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ आवर ट्रांजैक्शंस। सो दे आस्क्ड मी हाउ द प्रोजेक्ट वाज वर्किंग and how I implemented, what are the concepts used, just to get a clear understanding of my projects and what are the technologies that I am familiar with. मेरा कोई फाइनेंस रिलेटेड, यस, तो मेरे कोई फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं थे, बट भाई मैंने उनको आंसर से जस्टिफाई कर दिया था कि मेरे को फाइनेंस का नॉलेज है। तो अगर आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो बट नॉलेज होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट है तो इट इज वेल एंड गुड। राइट। तो एक क्वेश्चन मेरा भी है यहाँ पे, वैसे तो ब्लैकरॉक है वो एसेट मैनेजमेंट में काम करती है, बट स्टिल आई हैव डाउट कि अगर किसी को ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे उसका कोई इशू है? आई गेस कि होना तो चाहिए, क्योंकि कंपनी का टैक्स से ज़्यादा फोकस थोड़ा मेरे को फाइनेंस साइड लगा। मेरे जो बाकी दोस्त थे जिनने इंटरव्यू दिए थे, कई लोग का तो मेरे को ऐसा लग रहा था इसी कारण से उनका रिजेक्शन हुआ, क्योंकि उनको फाइनेंस का नॉलेज अच्छा नहीं था। क्योंकि उन्हें पूछे थे व्हाट आर बॉन्ड्स, इक्विटी क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करे थे थोड़ा। So it is plus to having those knowledge. Yes, Arvind. It is a plus. It is a plus, definitely. But ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होना और कंपनी के फंडामेंटल्स पता होना वो भी अलग है। मतलब अगर आपको नॉलेज है कंपनी का, मतलब जो दो इम्पोर्टेंट है, आई थिंक बैलेंस शीट और पीएनएल जो है उसके बारे में भी नॉलेज आपको अच्छा खासा है, तो आई गेस और ठीक होना चाहिए। बट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ऐसा नहीं, बट पिकअप करना चाहिए, वो सब थोड़ा बेसिक नॉलेज आप पढ़ के जा सकते हैं। ट्रेनिंग किया होना जरूरी नहीं है, आप पे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
Hmm. but no, so we it is fine. Just एक basic knowledge होना चाहिए finance का, Okay. trading वेडिंग का. So let's move on to the next round. That was round two, right, for interview. Yeah. So Jay, can you share what happened in round two and the questions they asked to you? Hmm. Round two was more on the technical side, and also few HR questions were included in there. Yeah. राउंड टू में मेरा पहले तो इंट्रोडक्शन दिए थे उनने. Actually, the guy who was taking my interview is not from India. He was from California. So the one major problem I faced was the accent of that guy. Right. Questions were easy. उनने भी मेरे प्रोजेक्ट क्वेश्चन पूछे. Then he asked me simple question of how to handle the stream of data. How would एक situation based problem दिए थे कि like I am given a stream of data that like 50 billion data is coming to me at a time. How would I handle it? And I need to present the analytics to the customers. How would I deliver them in a timely manner? Then I was asked few puzzles, uh, and all of them are based on probability only. In this interview, most of the questions were from the side of probability only. They were testing my probabilistic knowledge. And one specific question was asked on naive-Bayes theorem of the probability. Yeah. And yes, then some standard managerial questions like, am I willing to relocate and all that. It was also not a big interview. It ended in 20 to 30 minutes only. Jay, can you define the level of the questions they asked to you in interview, especially from probability and stats? From probability, I will say easy to medium, not hard. Like one question was very easy. Like it was very common question also. So I can describe the question. They asked me like three ends are at the three vertices of a triangle, and they will start moving to the either edge, either vertex at the same time. So what is the probability of the ends meeting? Yeah. So It is like ये तो बहुत ही standard है. standard GFG puzzle, we can say. Yeah. So this is very easy. इसका तो आंसर भी पता ही रहता है लोगों को. Yeah. Second one was hard. It was situation based and Jay left the meet. What happened? Okay, no problem. He will be joining in a while. So, Varun, please, can you start about your second round? Yes. So unlike Jay, my second round also was more or less based on finance, but this time, I mean, tech was there, but tech, he asked very basic questions of SQL, and more he asked about finance and statistics. This was this body. In statistics, he asked what is correlation, what is standard deviation. I mean, justify it with an example. So all that we need to know. In correlation, he asked me, and this was a hard question. I also had to know about it. That how are the interest rates offered by the banks related to the purchasing power of a person? So that all critical thinking based questions he had asked. Again, same he asked about investing and all. Then the same question he asked in another manner that why do you want to join BlackRock? So I guess this question we have to prepare for any company to sit. Right. CFC puzzles were asked, and he asked me about what was the hardest decision of my life. So that also you have to, I mean, just have an idea about it. Right. But thinking at the moment is a little bit difficult. Yeah. Standard GMT puzzles that one cake has to be divided into eight pieces. How many minimum bits are required? The ants problem was asked. Okay. All these questions were asked, and it was more of a finance based. I mean, he asked me, "What do you understand by risk?" So, I also read about the job description of BlackRock in PMG, and there was the mentioned skills like JavaScript, HTML, CSS is the plus. Like, did they ask these questions from you guys? no, no. Yeah, the job description was more on the data analytics side. Right. So coding part is not included in it. Right.
So talking to you guys so far, I have in conclusion. They asked about the finance, basic mathematics like probability statistics, and apart from that, standard GFG puzzles was the covered in the interviews, right? And the basic like resume and project part. Project part, but most important is SQL, I guess, for this because Yeah, my other SQL friends were is asked, important. yes, my other some friends were asked 5 SQL queries. So it depends on the panel also, but So I'm like little bit interested about the SQL questions. Can you share, guys? हाँ क्वेरी लिखने के लिए बोला था मेरे को एक ही याद आ रहा है अभी तो कि अब रेवेन्यू दिया है मंथ वाइज रेवेन्यू दिया है तो भी हमको नया टेबल बनाना है जिसमें मंथ रेवेन्यू और रनिंग रेवेन्यू मतलब अब तक कितना हुआ है Okay. वो लिखना था Jay, what about you? मेरे से तो स्पेसिफिकली एसक्यूएल का क्वेश्चन पूछे नहीं थे बिकॉज माय प्रोजेक्ट वाज बेस्ड ऑन फाइनेंस सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड फ्रॉम माय प्रोजेक्ट ओनली. Okay. So Jay और वरुण थोड़ा सा CTC या जो स्टाइपेंड जो भी है उसके बारे में अगर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल. 50,000 स्टाइपेंड है अभी हमारा जो में कन्वर्ट होता है so it is 18 lakhs to 22 lakhs per annum. So I think we covered all about the questions and each round's procedure. Now, before going to end this experience series, I want to ask one question which I generally ask to everyone. One tips which you. As I told, I had not reached to the answers of some questions, but you have to keep on telling them that this is how I'm taking, and get a hold on the language because all interviews, I mean, my friends and my interviews all were in English. So English, learning English is very important, and you should be able to express yourself. What's like set of skills on which we can prepare or focus? I guess SQL and the finance side, I mean, all accounting related a little bit, accounting and trading related. Like, facts. SQL and finance. And as I said, English speaking is also required. Thank you for saying that. I have same question from Jay. यस जैसा कि वरुण ने वो कम्युनिकेशन इज द की ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड आई वुड लाइक टू ऐड कॉन्फिडेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल आंसरिंग. और दूसरा अगर किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं बोलूंगा कि अपना रेज्यूमे को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ क्योंकि that was the thing that you are telling see I have done that and if you don't know what you have done then you are in the negative side from the start only. So I think that's enough for today. Thank you Arun and Jay for joining, and I think this content will help a lot for the people who are preparing for the BlackRock, especially for PMG role. So, and I wish you a very well future. So thank you for joining today. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you Arun. Thank you Arun.